Hello, bachcho. So let's read this question. Read the following extract and answer the questions or complete the sentences that follow. All night, the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long-cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half-dazed, moving to the clinic doors. तो ये पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है फ्रॉम द पोएम द ट्रीज रिटन बाय एड्रियन रिच। तो हमें इसमें से बताना है चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट मेंशंस द करेक्ट पोएटिक डिवाइस अगेंस्ट द करेक्ट एग्जांपल। फर्स्ट सिमिली, सेकंड मेटाफोर। सिमिली के अगेंस्ट दिया हुआ है लॉन्ग क्रैम्प्ड बोस एंड मेटाफोर के अगेंस्ट दिया हुआ है लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। पर्सोनिफिकेशन small twigs stiff with exertion, or simile like newly discharged patients, refrain under the roof, simile leaves strain toward the glass, personification like newly discharged patients, refrain half dazed moving। तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। सो वी नो सिमिली, हमारे को फर्स्ट जो पोएटिक डिवाइस दे रखा है इट इज सिमिली। So simile is a poetic device which compares two things using the words like, or we can say as। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं एंड सिंपल एग्जाम्पल वुड बी फेस लाइक अ मास्क, और वी कैन से वाइट एज अ स्नो, वाइट एज स्नो। तो अगर हम सिमिली की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन में ना लाइक का यूज हुआ है ना एज का यूज हुआ है, सो दिस वोंट बी द राइट आंसर। और अगर हम दूसरे में बात करें, सिमिली में लाइक का यूज हुआ है, सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड, रिफ्रेन अंडर द लूप, सिमिली में इसमें अगेन लाइक का यूज नहीं हुआ है या ना फिर एज का यूज हुआ है, ना दो चीजें एक साथ कंपेयर की गई है, तो हम इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देंगे। नाउ सेकंड पोएटिक डिवाइस व्हिच इज गिवन टू अस इज मेटाफर। अगर हम मेटाफोर की बात करें, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और अ फ्रेज लिटरली डोनेटिंग वन काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट और आइडिया इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर टू सजेस्ट द लाइकलीनेस और एनालॉजी बिटवीन देम। तो हम लोग दो चीजों को इसमें कंपेयर करते हैं मेटाफोर को। तो लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, सो लाइक का यूज हुआ है, सो इट इज अ सिमिली एंड नॉट अ मेटाफोर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका है। So let us talk about personification. तो हमें personification पता है, we take an object or an animal and give it human qualities. So personification is give when we give non-human entity human qualities. Then personification is the figure of speech used. तो अगर हम बात करें सेकेंड ऑप्शन में, सो स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, वी नो एक्सर्शन ह्यूमंस को ही होता है एंड इट इज बीन गिवन टू स्मॉल ट्विग्स, सो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। एंड इफ वी टॉक अबाउट द फोर्थ ऑप्शन में पर्सोनिफिकेशन इज लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, सो लाइक का यूज हुआ है तो इट इज अ सिमिली। अगर आपको रिफ्रेन का मीनिंग नहीं पता, तो रिफ्रेन इज अ पोएटिक डिवाइस, और वी कैन से इज अ वर्ड और अ लाइन that is repeated within the lines of stanza. So half days and moving is not being repeated in the poem. So ये option भी eliminate हो जाएगा। तो हमारा second option will be the right answer to the question. I hope you understood the question well. Best of luck.